the Divya Bhavya Ram Temple here at Ayodhya. Work on at a very, very fast pace to ensure that construction for phase 1, that's the ground floor of the temple, is completed before the 22nd of January. That's where the consecration of the temple or the idol of Lord Ram or Ram Lala, a 5-year-old child Ram, will be installed here at the temple. Now, what's happening right now? Cement work is happening, stone work is happening, makrana, marble is being used for flooring on the ground floor. So that's the work that's happening right now. That's point one. Point two, if you look at this Parkota wall that is being made, this is 14 feet wide. Let me tell you more about the Parkota wall, and let's try and get you closer to the Ram Temple. We'll come closer to the Ram Temple to be able to show you the effort that is happening right now. Now, these stones, Bansi Paharpur stones, have been brought from Rajasthan. These stones are being used for this temple. Apart from the Bansi Paharpur stones, granite has been brought in from Karnataka. Granite has been brought in from Karnataka for this construction work, for the Ram Temple construction here at Ayodhya. This is going to be spread over 20 acres of land. The entire land which the Hindu side got was 70 acres. Let's try and get you closer to the Ram Temple. I'll ask our camera person Sachin Chandok to come closer as we move closer to the Sri Ram Temple at Ayodhya. This is the work that's happening. Road construction activity happening simultaneously. And as we go closer to the temple, you can look at the kind of stone that is being used here. अब आप हमें समझाने का प्रयास कीजिए। अभी हम इसमें उत्तर दिशा में मंदिर की साइड खड़े हैं। तो ये हमारा ईस्ट साइड जो पूर्व दिशा है वो मंदिर की एंट्री है। मेन एंट्री जो वहाँ पे दिख रही है वो हमारा परकोटा है, जहाँ से पिलग्रिम्स आएंगे। दैट इज द मेन एंट्री, जो रामपथ से होते हुए वहाँ से होते हुए यहाँ से अंदर घुसेंगे, पोडियम पे आएंगे, कोर्टयार्ड में यहाँ से अंदर जाएंगे, यहीं से लाइन लगेंगे और सामने अंदर गर्भगृह है जी। ये हमारा पूरा ये इस तरह से यहाँ पे हम खड़े हैं। तो यहाँ जो मुख्य परकोटा है, जो ये कहा जा रहा है 14 फीट चौड़ी दीवार है, ये मुख्य परकोटा अभी जो हमारा प्रायोरिटी देखिए, परकोटा चारों साइड फैला हुआ 800 मीटर का है जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। अभी जो हमारा प्रायोरिटी का वो एंट्री का है, एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जो आपको दिख रहा है अभी 10 दिन के अंदर ये स्कैफोल्डिंग वगैरह सब निकल जाएगी और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और जो 6 मंदिर वो सप्तऋषि मंदिर हैं, उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है। वो हमारा सेकंड फेज में जनवरी के बाद स्टार्ट करेंगे। वो हमारा साउथ दिशा में दक्षिण की तरफ है वो। और जो परकोटा पे मंदिर बन रहे हैं, परकोटा में हमारे ये कोने पे 4 मंदिर हैं, इनकी फाउंडेशन हो गई है, इसका काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। 2 मंदिर बीच में है, ये काम भी हमारा जनवरी के बाद शुरू होगा। गर्भगृह अगर पूछे तो गर्भगृह कहाँ? गर्भगृह हमारा पश्चिम दिशा में है जी। ये पीछे हमारा प्रार्थना कीर्तन मंडप है, फिर उसके पीछे बीच में गर्भगृह है। 3,500 workers are working round the clock. Let me get you closer to some of these complexes so that we can show you where the temple is being constructed. Now, these are the workers. क्या नाम है आपका? कहाँ से आप? झारखंड से। मैं राजेंद्र सिंह। राजेंद्र, क्या काम कर रहे हैं आप यहाँ पर? वो स्कैफोल्डिंग कर रहा हूँ। स्कैफोल्डिंग का काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? कन्हैया लाल गुप्ता। गुप्ता जी, कहाँ से आप? बहराइच से। आप बहराइच से, तो उत्तर प्रदेश से ही आप। तो क्या काम करते हैं आप यहाँ? हेल्पर का काम करते हैं। अरे बहुत भी बढ़िया। और आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल मौर्य। करते हो आप? प्लास्टर का काम करते हैं। तो कब से काम कर रहे हैं यहाँ? 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। आपको? मेरा 1.5 महीना हो गया। हाँ, क्या नाम है आपका? राम मंदिर। अच्छा, और आप क्या काम करते हैं? हम सिविल का काम करते हैं। तो इस तरह से there are 3,500 workers who've been working round the clock for the construction of the Ram Temple. There is a history. This part of the temple is at its narrowest. If we could show you the temple at its narrowest here, because this was the plot where that mosque structure was. That mosque structure, after the Supreme Court order, this land
has now was given to the Hindu side, and that is where construction activity started, virtually round the clock. It will happen in several phases. What's unique in this temple is that there is no iron that is being used. When you talk about RCC, there isn't reinforced concrete that's being used here. There is stone dust is being used instead of sand, and that is to give it more in the base. That is to give it more strength. And the levels, 14 meters, when you talk to engineers on ground, 14 meters of base has been created across 6 acres of land. So that shows you the wide area where the base was created, and then granite was brought in. Granite was brought in from Karnataka for strengthening the other levels before stone construction has started. Now this is floor 1, some parts of work on floor 2, and then the shikhar will be 161 feet. That will be the height of the temple here at Ayodhya. So once again you'll notice that there is something that's coming from different parts of the country for this Divya Bhavya Ram Mandir at Ayodhya. Incidentally, when the initial efforts started, bricks with Sri Ram written came from every village across the length and breadth of our country, and those bricks are now a part of the foundation of this temple. But that's not all. There is also wood, for example, that's coming in from Maharashtra, gold that's coming in from different parts of the country, granite that's come from Karnataka, workers who've come from Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh, Odisha, Bengal, Karnataka, stone workers who've come from different parts of the country, because stone cutting is a very intricate process. So the Parkota, as Champat Rai of the Sri Ram, the Tirth Kshetre said, that there is something from every part of this country in this temple. People from across the length and breadth of this country have contributed to this temple. The Parkota, for example, more seen in southern India. Parkota, or the periphery wall or the boundary wall or the fortress-like walls around the temple. There's also, of course, a retention wall that is coming up, and that goes all the way down to the base of Saryu River on the other side, so that that water does not come in here, or soil. There's no soil erosion in this area. So water retention, all efforts being made, scientifically done to ensure that the temple survives and flourishes for another 1,000 years. But is it just about a temple, or is it through the story of Maryada Purushottam Sri Ram talk about the Sanatan culture? Why is he Maryada Purushottam, or the ideal man? Or look at Bharat, for example, and I'll tell you about the Khadao in a moment. So Lord Ram was exiled, he was banished, he left his palace for a period of 14 years. Did Bharat take over the empire? As you see, there are brothers who fight, there are brothers who kill each other for property or for the empire. Did Bharat do that? No. He put Sri Ram's khadao, or his slippers, on the throne and ruled for 14 years. He said he was serving people in the name of Lord Ram for 14 years. And when Lord Ram came back, that's where you and I and our entire country, our Sanatan Dharma celebrates Diwali, Deepavali, the festival of lights. Well, that is when you celebrate the festival of lights, when Sri Ram came home. But before that, a look at the khadao that are now being made, khadao of gold and silver. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो पीठा जो चरण पादुका है यहाँ पर एक है, और अंदर की तरफ और एक चरण पादुका यहाँ पर रखा गया, जहाँ पर जो घर के लोग हैं, घर के निवासी है, वो यहाँ पर आरती करेंगे, और यहाँ से
लगभग इन्हीं तरह से जो छोटे छोटे घर हैं, कॉलोनी एरिया से, हर किसी के घर में ये चरण पादुका जाएंगे और जिसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ से अयोध्या के लिए ये चरण पादुका रवाना किए जाएंगे। बात करते हैं यहाँ के घर के निवासी से कि उनका क्या यहाँ पर कैसा वो महसूस कर रहे हैं कि उनके घर पर यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है, पूजा कर रहे हैं घर के निवासी। और इसके बाद बात करेंगे कि क्या महसूस, कैसे महसूस कर रही है यहाँ के लोग जो इन कॉलोनी एरियाज में, इन घरों में अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं। मैडम आपका बहुत अच्छा, मेरा नाम लक्ष्मी है और सुबह से हम लोग ऐसी घर घर जा रहे और बहुत अच्छा है। ये तो भाग्यशाली हूँ मैं तो। నాకు చాలా సంతోషంగా, నా జన్మ సఫలమైంది, నాకు ఇంతకన్నా భాగ్యం ఇంకేమీ లేదు। तो ये मैडम ये बता रही हैं कि ये बहुत खुश है, बहुत जो है इमोशनल हो गई हैं, लेकिन इनका ये बताना है कि इस जो है सेवा में इनकी भूख प्यास का इनको अंदाजा नहीं रहता है, भूख प्यास नहीं लगती है इस सेवा में, तो बहुत ज्यादा खुश है और बहुत आनंदित महसूस कर रही है। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद। श्रृंगेरी से अयोध्या, हम ये अयोध्या में समर्पण करने के लिए हम जा रहे हैं। इसका बीच में हम 1 करोड़ घर जाके वो घर घर में उसी के पास पूजा करने का हमारा संकल्प है। अभी तक हम 78 लाख घर जाके पूजा किया है। कौन से राज्य में अभी तक ये सफर हुआ है और आगे कौन से राज्य में सफर होगा? हम ये पहले श्रृंगेरी, कर्नाटका श्रृंगेरी में स्टार्ट किया था। तब हम 4 राज्य को प्लान किया, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, ये सभी खत्म करके हम नॉर्थ साइड जाने का प्लान था। लेकिन ये 4 राज्यों में हमको 1 करोड़ घर पूरा हो रहा है। 22 जनवरी तक हम ये 1 करोड़ घर जाके ये पूरा अयोध्या में समर्पण करने का निर्णय लिया है। So you heard about the Charan Padukas or the Khadao of Lord Ram. Now, what about his idol, the new idol of Lord Ram? 51 inches tall. You'll be able to see his toes and you'll be able to see his eyes. Toes to seek his blessings, eyes to talk to him, tell him your problems and hope and pray that your problems are solved. So while that process happens, how are those eyes being made? So there are 2 Krishna Shilas from Karnataka and 1 marble from Makrana idol that's being manufactured right here. It's being made here, right here. It's been sculpted right here in Ayodhya. One of the 3 will finally be selected for consecration here at the Garbhagriha. And that idol, that picture of Lord Ram is something that should not just have a 5-year-old child's looks and the balatva, as they say, the child-like face of Lord Ram, but also the divinity of Lord Ram. Let me tell you more about it. The eyes there play a very significant role. We bring you more in this report. तो वहाँ अक्सर उसका आना जाना रहता है अयोध्या, और उसका काम है पेंटिंग का, मीनाकारी का। तो वो जब वहाँ जाता है तो उसके गले में एक लॉकेट था जो एज इट इज़ आँख जैसा था। तो वहाँ देखा पुजारी जी ने, तो उनको पसंद आया, वो देख के बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने उसको पूछा कि भाई क्या ऐसा बना सकते हैं प्रभु श्री राम जी के लिए? तो उसने कहा हाँ बना सकते हैं। तो उन्होंने उसको ऑर्डर दिया कि आप बनाइए। तो सोने का काम हम लोगों ने किया, मैंने और मेरे बच्चे पहले ने, और फिर मीनाकारी जो वीरेंद्र ने की। वो तो ईश्वर, मतलब समझ ले कि ईश्वर की असीम कृपा है कि ये इतना बड़ा मौका हमें मिला। Sri Ram is a Suryavanshi from the clan of the Sun Lord. On Ram Navami, the sun rays, from the moment Lord Ram was born at 12 noon, the sun rays will reflect directly on the Garbhagriha and will reflect on his face
sun rays on Lord Ram's face. That is how this temple is being conceptualized, and astronomers, their assistance was taken. It's called the project itself is called the project is associated with the sun rays of the sun touching Lord Ram's face, or blessing Lord Ram's face. All of that will be a part of the Sri Ram temple here at Ayodhya.